Hi guys, welcome to Hamid Smart Learning Hubs. So in this video, I'll tell you about common TDS mistakes that can lead to penalties. Okay? So कुछ common mistake है जिसलिए हम लोगों को penalties और interest pay करना पड़ता है. So इसी के बारे में हम लोग आज discuss करेंगे. So first जो mistake है, first number one is non-deduction of TDS when applicable. Okay? So many businesses fail to deduct TDS while making payments to contractor professionals or vendors. For example, suppose ABC Limited pays 10 lakhs to a freelancer or contractor. So we have to deduct TDS under section 194J at 10% rate में TDS कटना पड़ता है. So 10 lakhs का 10% हो जाएगा होता है 1 lakh. But for some reason कोई TDS deduct नहीं किया. Okay? So अगर TDS deduct नहीं किया then consequences क्या होता है? Consequences क्या हो सकते हैं? The company may be liable to pay 100% of TDS amount as a penalty. और एक चीज हो सकता है अगर आप कोई एक्सपेंडिचर शो किया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया देन पूरा एक्सपेंडिचर आपको डिसअलाउड हो जाएगा. सो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऑलवेज चेक टीडीएस एप्लीकेबिलिटी बिफोर मेकिंग पेमेंट्स. ओके, जब भी आपको पे करना पड़ेगा first you have to check whether you have to deduct TDS or not. Number two, deducting TDS at the wrong rate. For example, किसी को रेंट पे करना है, मुझे रेंट पे करना है, मेरा रेंट पे करना है मुझे. सो रेंट का सेक्शन होता है 10%, बस गलती से 5% रेट में टीडीएस डिडक्ट कर लिया अंडर सेक्शन 194I. ओके, सो 5 lakhs, सपोज 5 lakhs मुझे रेंट पे करना है. सो 5 lakhs का 10% होगा, होना चाहिए था 50,000, बट मैंने 5% रेट में टीडीएस काटा. दैट मीन्स 25,000 मैंने टीडीएस डिडक्ट एंड डिपॉजिट किया. सो बैलेंस जो 25,000 ये आपको पे करना पड़ेगा जो आपने लेस टीडीएस डिडक्ट किया. Okay, the company will be required to deposit the shortfall along with the interest at 1.5% per month from the due date. Okay, so always verify the correct TDS rate applicable for the transaction. Number three, late deduction of TDS. TDS must be deducted at the time of payment or when the liability is recorded in the books, whichever is earlier. For example, PQL Limited records an expenses of 2 lakhs for a consultant on 10th March. 10th March में consultancy charges का expense record किया, but TDS deduct नहीं किया. Okay, TDS deduct करना चाहिए था, but TDS deduct किया on 30th April. So you have to pay interest for late deduction of TDS at 1% per month. आपको 1% per month basis में interest pay करना पड़ेगा. Okay, so always deduct TDS at the time of booking the expenses or making the payment, whichever is earlier. Right? Number 4, late deposit of TDS to government. मतलब after deducting TDS, it must be deposited with the government by the 7th of the next month. आपको next month का 7 days का अंदर TDS deposit करना पड़ता है. Like April 25 का TDS, you have to deposit it within 7th May. Okay, May 25 का TDS, you have to deposit within 7th June. ओके, मतलब नेक्स्ट मंथ का 7 days का अंदर मुझे टीडीएस डिपॉजिट करना था, बट फॉर द मंथ ऑफ मार्च यू हैव टू डिपॉजिट विद इन 30th April. ठीक है, बट इफ यू हैव नॉट डिपॉजिटेड द टीडीएस विद इन द ड्यू डेट देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट 1.5% पर मंथ. So always deposit TDS before the 7th of the next month or before the due date. Number 5, non-filing or late filing of TDS returns. Okay, so TDS return का जो due date है, we have to file the TDS return quarterly basis. So quarter 1 Q1 का due date is 31st July. Q2 का due date is 31st October. Q3 का due date is 31st Jan and Q4 का due date is 31st May. Okay, so we have to file the TDS return on or before the due date. Suppose Q1 का due date is 31st July, but I have filed the return on 7th August.
So we have to pay late filing fees at 200 rupees 200 per day. Okay, 200 per day basis में लेट फाइलिंग फी पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234E. So यहाँ पर 7 days का लेट इंस्टेड ऑफ 31st July I have filed the return on 7th August. So 7 into 200, that means 1400 late filing fees you have to pay. So always file TDS return before the deadline to avoid penalties. Okay. Number 6, incorrect PAN details in TDS returns. Providing an incorrect PAN of the payee or not verifying the PAN before submitting the return. For example, DF Limited deducts TDS at 10% on vendor's payment but enters an incorrect PAN in the TDS return. अगर आप incorrect PAN provide करोगे at the time of filing TDS return, then आपको the recipient will not get TDS credit and the company may be required to deduct TDS at 20% under section 206AA. अगर आप इनकरेक्ट पैन प्रोवाइड करोगे देन आपका 20% रेट में TDS पे करना पड़ेगा. Okay, so always verify your PAN details before filing the TDS return. Number 7, not issuing TDS certificates on time. That is Form 16 or Form 16A. So for salaried person के लिए we have to issue TDS certificate Form 16 annually, and for vendors we have to issue Form 16A quarterly. Okay, so TDS certificate must be issued to employees and vendors so that they can claim tax credit. Otherwise, the company may face penalties at rupees 100 per day per certificate. Okay, so always issue Form 16 or Form 16A or TDS certificates on time. Number 8, claiming TDS credit without actual deduction. Okay, suppose for example, some businesses can claim TDS credit in ITR without verifying whether claiming TDS credit without actual deduction. For example, suppose अपने while filing your ITR return, अपने you have not checked your form, you have not checked your 26AS or AIS. Okay, आपका TDS था, but आपका employer आपका TDS का credit नहीं दिया and आपने claim कर लिया. को क्या होगा? आपको refund नहीं मिलेगा एंड आपका एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, सो एक टैक्स पेयर क्लेम्स 30,000 as TDS credit in their ITR without verifying 26As or AIS. They realize the payer never deposited the TDS. So consequences क्या है? The ITR may be defective and the taxpayer will have to pay the tax liability plus interest. Okay, so always cross check TDS details in Form 26As or AIS before filing your ITR return. Number 9, deducting TDS from exempt transaction. Okay, so some payments are exempt from TDS but businesses still deduct TDS unnecessarily. इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपको this can lead to unnecessary compliance burden and refund claims. So always check whether TDS applies before deducting it. Number 10, not considering section 206AB for higher TDS. That means under section 206AB, if the recipient has not filed ITR for the last 2 years and TDS deducted for is 50,000 or more, then TDS must be deducted at twice the regular rate. Okay, for example, a company pays 5 lakhs to a contractor but does not check their ITR filing status. The contractor is a non-filer, so instead of 1%, TDS should be 2% under section 206AB. Matlab, before deducting TDS, you have to check that whether your contractor, you have to check whether your deductee has filed a TDS return or not. अगर 2 years के ज़्यादा रिटर्न फाइल नहीं किया एंड TDS 50,000 और मोर TDS डिडक्ट नहीं किया, देन आपको ट्वाइस रेट में TDS करना पड़ेगा. Okay, so consequences, the company may be liable to pay the shortfall along the interest and penalties. So always verify the recipient's ITR status before deducting TDS. And ये जो section 206AB, ये from 1st April 25 से नहीं रहेगा. Okay, so the finance bill 2025 proposes to meet section 206AB. मतलब from 1st April 25 से आपको ये चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ये आपका डिडक्टी ITR फाइल नहीं किया कि नहीं. Okay, so section 206AB
एप्लीकेबल होगा टिल 31 मार्च 25। 10 TDS मिस्टेक्स है, ओके, जो आप अवॉइड करना पड़ेगा फॉर अननेसेसरी पेनल्टीज और इंटरेस्ट के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको TDS एंड TCS सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल practically, then you can join my TDS mastery course with practical training. For that, you have to go to my website hamidsmalllearninghub.com। ठीक है, जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जैसे TDS, जैसे हाउ टू पे TDS थ्रू चालान, ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन, ऑनलाइन टेन एप्लीकेशन, हाउ टू फाइल द TDS रिटर्न फॉर वेंडर्स, how to file TDS return for vendors, allied person, non-resident, TCS return, how to file the revised return, how to download and generate Form 16, Form 16A, TCS certificate, everything I have covered under this course. So अगर आपको TDS and TCS practically सीखना है, then you can join these courses. Not only that, after joining the course, you will get the access of my TDS Masters community. मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका थ्रू आई विल सपोर्ट यू थ्रू लाइफ टाइम। मतलब जो भी आपको क्वायरीज होगा, प्रॉब्लम होगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा एंड आई विल गिव यू सपोर्ट फॉर लाइफ टाइम। ओके, एंड अगर आप TDS मास्टर कोर्स ज्वाइन करोगे, यू विल गेट ए बोनस हाउ टू फाइल आईटर रिटर्न कोर्स। अगर आपको आईटर रिटर्न फाइलिंग सीखना है, सो ये आपको TDS मास्टरी कोर्स के साथ फ्री में मिलेगा। ठीक है, सो यू हैव टू गो टू माय वेबसाइट एंड यू हैव टू join the courses from here. After joining the course, you will get 100 plus recorded videos, lifetime access of the course, and lifetime support through Telegram group, because my mission is to help you guys. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, so like and share जरूर करना, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.